हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 2 के बचे हुए क्वेश्चंस 5th, 6th, 7th और 8th। ये क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन से, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हेयर वी गो, नाउ राइट डाउन स्टेप 1। इट इज़ 169 minus 1, it is 168. Then step 2 is 168 minus 3 is equal to 165. Then step 3 is 165 minus 5. It will be 160. Then step 4. Step 4 is 160 minus 7 is equal to 153. Step 5 is 153 minus 9 is equal to 144. Then step 6 is 144 minus 11. We get 133. Then step 7, we have 133 minus 13 is equal to 120. Then step 8, we have 120 minus 15 is equal to 105. Then step 9 is 105 minus 17 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर, और सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा यहाँ पर 88. देन इज स्टेप 10, 88 minus 19, and here we get 88 में से 19 जब जाएंगे we get 69. Then step 11, we have 69 minus 21, and we have 8 and 4, that is 48. Then is step 12, we have 48 minus 23 is equal to 25. Then in step 13, we have 25 minus 25 is equal to 0. So here we get 0 in the step 13. So we get 0 in step 13, and therefore under root 169 is equal to. Next question is 81. Under root 81, we have to find out the value of under root 81. So we start with the step 1. Step 1 is 81 minus 1 is equal to 80. Then step 2 is 80 minus 3 is equal to 77. Then is step 3, it is 77 minus 5 is equal to 72. Here is very simple calculation, और अली भी बहुत इजीली कर सकते हैं हम इस सिंपल कैलकुलेशन को. Then is step 4. Step 4 is 72 minus 7, and we get 65. Step 5, we get 65 minus 9, and what we get is 56. Then is step 6. In the step 6, we get 56 minus 11, and here we get 45. Then यहीं पर ही कर लेते हैं इसको. Then step 7, we get 45 minus 11 के बाद आएगा 13, and we get here 32. Then is step 8, 32 minus 15, and we get 17. Step 9, we have 17 minus 17 is equal to 0. So we can write here we get 0
in step 9. Therefore, under root 81 is equal to 9. And here we get the value of under root 81. Now next question is 256. 256 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखा है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 256 के लिए. दैट इज़ स्टेप 1. अब ये थोड़ी बड़ी डिजिट है, इसमें नंबर ऑफ जो स्टेप्स आएंगे दैट विल बी मोर. तो देखते हैं हम कितने स्टेप्स में ये हमारा आंसर इसमें निकलता है. तो स्टेप 1 इज़ इक्वल टू 256 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 255. स्टेप 2, 255 minus 3 is 252. Step 3, 252 minus 5 is equal to 247. Step 4, 247 minus 7, 240. Step 5, 240 minus 9 is equal to 231. Step 6, 231 minus 11 is 220. Then is step 7, 220 minus this will be 13. 11 के बाद 13 आएगा. Then we get 207. Then in step 8 we have 207 minus 15 is equal to 192. Then in step 9 we have 192 minus 17 is equal to 175. Then in step 10 we have 175 minus 19 is equal to 156. Then in step 11 we have 176 minus 21 is equal to 130. Now step 12 में 135 minus 21 के बाद आता है 23. 23 subtract करके we get 1, 1 and 2. Then in step 13 we get 1, 1, 2 minus 25. Next odd number is equal to, now we get 87. Then is step 14. In step 14 we get 87, that is the result, minus अब 25 के बाद next odd number will be 27. So we get here 60. Then step 15 will be 60 minus 29 is equal to 31. And in step 16 what we get, in step 16 we get 31 minus 31, that will be the next odd number and is equal to 0. So here we can see that we get 0 in the step 16. 16 step में हमें 0 मिला है. So we can write here we get 0 in step 16. So therefore under root 256 is equal to 16. How we can cross check it, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको किस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं. इसका वी कैन टेक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर एंड उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फ्रॉम दैट मेथड ऑल्सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 256 इज इक्वल टू 16. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी निकाल के देख सकते हैं. आंसर विल बी 16 ओनली. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144. वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 154. And now the last question, that is question number 8, is 144. That is we have to find out the square root of 144. Then square root of 144, इसमें भी हम स्टेप्स उसी तरह से सेम फॉलो करेंगे. ये मैंने पहले से ही आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है क्योंकि हमें प्रोसीजर पता है कि वी हैव टू टेक द इनिशियल नंबर जिसकी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वो हमने नंबर लिया. स्टेप्स वी हैव टू राइट लाइक दिस.
स्टेप हमें सभी लिखने हैं यहाँ पर, तभी ताकि हमें पता चले कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5 और हमें किस स्टेप में जाकर 0 वैल्यू मिल रही है एंड वी हैव टू स्टॉप देयर। तो स्टार्ट करेंगे हम 144 से, जिसका हमें रूट निकालना है। उसमें से सक्सेसिवली हमने ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते रहना है और जो रिजल्टिंग नंबर आएगा उसको यहाँ पर लिखते रहेंगे। उसमें से नेक्स्ट सक्सेसिव जो भी हम ऑड नंबर होगा उसको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को नेक्स्ट लेना है। देन नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर 135 आया, देन 135 को में से माइनस किया हमने 7 जो कि 5 के बाद ऑड नंबर आता है, तो 128 आया। देन फिफ्थ स्टेप में 128 माइनस 9 नेक्स्ट ऑड सक्सेसिव नंबर है, देन इज इक्वल टू 119 आया। देन 119 में से सब्ट्रैक्ट किया 11 को, वी गेट 108। देन 108 में से वी हैव सब्ट्रैक्टेड 13, देन वी गेट 95। देन 95 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया, देन वी गेट 80। देन 80 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 17, वी गेट 63। 63 में से 19 सब्ट्रैक्ट हुआ, वी गेट 44। 44 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 21 इज इक्वल टू 23 एंड 23 माइनस 23 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट 0 इन द स्टेप 12. So we get 0 in step 12. It means under root 144 is equal to 12. Here we get the answer. So this is one of the method, that is repeated subtraction method, through which we can easily find out, हम easily find out कर सकते हैं वैल्यू किसकी, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट की हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमने सारे सम सॉल्व करके देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक और मेथड स्क्वायर रूट निकालने का किसी भी नंबर का। टिल देन बाय।